Thank you, Sri Priya, for such an beautiful introduction. Okay, so today we will be going through the topic basic nursing care, bedridden patient. So, as you are aware, in our palliative care setting, we are mostly dealing with the patient who are terminally ill, who are more bed bound. So, in order to provide a proper or total nursing care, we have to focus on particular important aspects, right? So, just for a what session to be an interactive, I would like to get some idea. What do you mean by basic nursing care? Yeah, I have asked one question. Uh, what are the basic nursing care which we provide to the patient? You can respond through chat box or you can unmute yourself and speak. मैम बेसिक नर्सिंग केयर से हमारा वो है कि भाई पेशेंट को जो भी हम उसको मेडिकल असिस्टेंस जो भी दे सकते हैं कि वो कंफर्ट रह पाए, टोटल हेड टू टू जो भी हम उसको प्रॉब्लम्स है उसमें जो भी नर्सिंग केयर दे सकते हैं या उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए जो जैसे कि बेड सोर्स वगैरह हो जाते हैं वहाँ ड्रेसिंग वगैरह या पेशेंट को इंजेक्शंस लगने हैं उसको तो कैसे लगने हैं उसको कैनुला वो हो गया या कैथेटर पे है पेशेंट वो सारी केयर जो हम उसको कंफर्ट फील कराने के लिए वहाँ पे दे सकते हैं. Thank you so much. You are right. So, basic nursing care means overall head to toe care which we are providing to the patient, right? So, in order to provide the basic nursing care, we have to go deal with certain principles. Like if the patient is bedridden, we have to follow certain principle while caring a patient. So that principle includes we are mainly giving nursing care to a bedridden patient in order to prevent health related complications, right? Health related complications means already the patient is in a problem, in a disease condition. Besides that, like if a patient is bedridden, bed sore can happen, right? So the health related complication we can prevent by giving a proper nursing care. Then in order to promote comfort, right, to build the confidence, if the patient is overall physically good, for all the four aspects, physical, mental, social, spiritual, every aspects we will touch it, and we provide comfort to the, so that we can provide comfort to the patient in order to build confidence and also prevent isolation, right? So the patient will be like the patient, if the patient has particular disease or even the patient has a bed sore, patient will be isolated from the society, or even from within the house itself he will be isolated from his family members, right? So we have to prevent isolation by providing a proper nursing care. The patient can improve his status and he can prevent from isolation, and also overall we can improve the quality of life of the patient. As I said, four aspects are very important: physical, social, spiritual aspects. So in order to improve the quality of care, we are also providing basic nursing care to the patient, right? So what are the basic needs of the patient? Like as one of the candidate has said that the basic nursing care include head to toe care. So head to toe care means from head to the toe, that is head care or hair care, oral care, skin care, eye care, ear and nose care, hair care, perineal care, and nail care. All these are the important cares which we follow for the patient who is bedridden, right? So first we'll look into the oral care. Oral care, that is equal to the overall health of the patient, right? So why it is said that oral care is equal to overall health of the patient? ऐसा क्यों बोला है कि oral care is equal to overall health of the patient है? Any responses? Why it is oral care is equal to overall? Why eye care is not equal to overall? Health? Overall health. 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 Overall heal
मैम बिकॉज जो कुछ है मतलब माउथ से ही ले पेशेंट मेडिसिन लेगा, फूड ले रहा है, जो कुछ जाना है उसके मुंह के से ही होके अंदर जाना है। तो अगर उसका ओरल ठीक नहीं होगा तो ओवरऑल हम कुछ भी दे रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। वेरी गुड, राइट। आपने जो कहा वो सही है, क्योंकि अगर माउथ केयर ही नहीं पेशेंट को मिलेगा तो पेशेंट कैसे खाएगा? खाएगा नहीं तो प्रोटीन प्रोटीन नहीं मिलेगा या न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से पूरा फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होगा। फिजिकल के साथ साथ अच्छा भी नहीं लगेगा तो साइकोलॉजिकल स्टेटस भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए ओवरऑल ओरल केयर इज इक्वल टू ओवरऑल हेल्थ। हमें पता है कि हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे लाइक क्या बोलते हैं, ड्राइनेस वगैरह की वजह से या मॉइस्चर रहता है, तो मीडियम ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बहुत जल्दी होता है ना। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादातर माउथ केयर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि माउथ ही फर्स्ट एरिया जहां से हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, वो माउथ होता है, राइट। हम फूड डालते हैं तो वो सलाइवा के थ्रू मिक्स होके डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो एपेटाइट को इंड्यूस करना है तो ओरल केयर इनिशिएट करना ही है, राइट। So purpose क्या है? Mouth is an excellent incubator of bacteria, of growth of bacteria. Hygienic practices help to maintain healthy status of the mouth, teeth, gums and lips. Like oral care देने से क्या होता है? Remove the food particles that may be likely medium for bacterial growth. Keep the lip mucus soft and clean, intact and moist, and also promote comfort. राइट। सो इन सब पर्पस के लिए हम ओरल केयर देते हैं, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स हो वो रिमूव हो सके, क्योंकि वो फूड पार्टिकल्स अगर माउथ में रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। एंड ऑल्सो लिप्स म्यूकस वगैरह सॉफ्ट रहता है, मॉइस्चर इंटैक्ट और मॉइस्ट रहता है। नहीं तो क्या होगा, ओरल केयर नहीं देंगे या प्रॉपरली ओरल केयर दिया और पेस्ट मुंह में ही रह गया तो ड्राइनेस होगा, है ना। तो इसलिए जब भी ओरल केयर देते तो पेस्ट वगैरह अच्छे से रिंस करके बाहर निकालना हम पेशेंट को स्पेशली बोलते हैं, 3-4 बार रिंस करके थूकने के लिए पानी, है ना। एंड ऑल्सो इट प्रमोट कंफर्ट। Then it also improve the nutritional status, that is appetite को, भूख को बढ़ाता है, stimulate the blood circulation of the gum, thus maintaining healthy firmness and eliminate the source of unpleasant odor. Yeah, एक्सप्लेनेशन की इसके लिए जरूरत नहीं है। प्रिवेंट डेंटल कैरीज, जो भी फूड पार्टिकल्स रिटेन होके टीथ वगैरह डैमेज करता है उसको भी प्रिवेंट करता है, राइट। देन व्हाट आर द कॉमन ओरल प्रॉब्लम्स? क्या क्या हो सकता है? किसी को नहीं होता ओरल प्रॉब्लम? मैम सबसे ज्यादा तो कैरीज ही होता है, हाँ, और? और बैड स्मेल हो सकती है, बैड ब्रेथ जो है, हाँ। पेन हो, टूथैक हो सकता है, ओरल सोर्स हो सकते हैं मैम। हम्म। बहुत सारी जैसे बेड रिडन को ज्यादातर मेडिसिन ले रहा है उनको ज्यादातर चांसेस होते हैं। और टेस्ट नहीं आता है ऐसे पेशेंट्स को कि बीमार है मेडिसिन ले रहे हैं, टेस्ट चला जाता है। Yeah, thank you for your response. So the common, जैसे आपने कहा, the common oral problems are dry mouth, pain mouth, halitosis, that is bad breath or smell, candidiasis, that is fungal infection, candidin albicans की वजह से जो curd like structure या curd like things जो है mucous membrane में, tongue में coated रहता है, right? And oral mucositis, that is जो layers है tongue के या mucosal layer है वो inflate हो जाता है, या ऑल्ट्रेशन इन द टेस्ट। ओरल प्रॉब्लम होता है तो एग्जैक्टली ओरल टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। देन एक्सेसिव सलाइवेशन, हमें पता है अगर एक छोटा सा भी अल्सर या कट माउथ में हो जाता है तो सलाइवेशन बहुत ज्यादा, थूक बहुत जल्दी जल्दी आता है, राइट। सो एक्सेसिव सलाइवेशन भी प्रॉब्लम है। ओके, सो जीरोस्टोमिया, दैट इज ड्राइनेस ऑफ द माउथ और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, जैसे इमेज में दिख रहा है रेडन होके एकदम ड्राई होके क्रैक जैसा दिखता है, उसे जीरोस्टोमिया कहते हैं। कैंडिडियासिस, दैट इज कैंडिडिन एल्बिगन फंगल इन्फेक्शन जो है, कर्ड लाइक पैचेस, वाइट वाइट पैचेस जो है वो टंग में या फिर जो पैलेट है, लेयर्स में, सब म्यूकोजल लेयर्स के अंदर दिखता है, राइट। नेक्स्ट हेलिटोसिस, दैट इज बैड ब्रेथ, राइट। इसका सब लोग ऐड देखते हैं कोलगेट का, है ना, वही है। देन म्यूकोसाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसल लेयर, राइट। सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ लाइक पेशेंट्स कीमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडिएशन ले रहे हैं, उन लोगों को ड्राइनेस ऑफ द माउथ, जीरोस्टोमिया और इन्फ्लेमेशन जो है उसके सिम्टम्स ज्यादा दिखते हैं। ओके, सो हु नीड्स माउथ केयर? किन किन को माउथ केयर चाहिए?
Any response? Ma'am, Or we, first of all, everybody needs mouth care. yeah, very good. Then, so if we are dealing with a patient in a palliative care setting, then who all patients need, or a general setting, who all patients need a mouth care, who are mostly bedridden, terminally ill patient, who is unconscious, right? So these all patients need, and the patient who is in nasogastric tube feeding, patient with infection and disease of the mouth, yeah, like बोलते हैं ना mouth cancer, or oral cancer and all, right? And post-operative patients breathe through the mouth. जो ventilator patients होते हैं वो लोग वेंटिलेटर में रहते हैं तो माउथ ब्रीथिंग भी रहता है ना, तो उसमें ड्राइनेस रहता है, तो उससे, या फिर नॉर्मली अगर पेशेंट्स नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं और माउथ से सांस ले रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ओरल केयर इज इम्पॉर्टेंट, राइट? सो व्हाट ऑल असेसमेंट वी हैव टू डू व्हाइल वी आर गिविंग एन बिफोर वी आर गिविंग एन ओरल केयर? क्या क्या असेसमेंट करना चाहिए? जस्ट ये जनरल टॉपिक है, जस्ट डिस्कशन से पूरा टॉपिक निकल जाएगा। जो आपको पता है वो आइडिया आप मुझे कह दीजिए तो इजी हो जाएगा ना, कि क्या पता है, नहीं तो मैं वो भी बोलती रहूंगी, एक्सप्लेन करती रहूंगी, है ना? सो असेसमेंट क्या क्या करेंगे पेशेंट के लिए माउथ केयर देने से पहले? मैम कोई उसको माउथ में अंदर कोई सोर तो नहीं है, पहले तो वही देखेंगे। यस। और कोई रेडनेस, कोई ऐसे ग्रोथ नहीं है। फिर जो हमने जो अभी बोला, कैंडिडियासिस तो स्मेल नहीं के है, लिए इन्फेक्शन तो जी। नहीं है ना? सो दीज आर ऑल द असेसमेंट। सबसे पहले जब हम माउथ ओपन करेंगे तो हमें लिप्स दिखता है, तो सबसे पहले लिप्स देखेंगे, कोई क्रैकिंग या कई बोलते हैं चिलोसिस, एंगल ऑफ द यहाँ पे क्रैकिंग तो नहीं है, क्रैक्ड लिप्स तो नहीं है, वो सब चेक करेंगे। ड्राई कोटेड टंग है या नहीं, व्हाइट कर्ड लाइक पैचेस, दैट इज कैंडिडियासिस इन्फेक्शन तो नहीं है ना? जिसको ओरल थ्रश भी कहते हैं हम। अल्सर्स इन द माउथ, any redness or bleeding, any pain in the mouth, dysphagia, that is difficulty in swallowing or changes in any taste of the food, any difficulty in chewing, then anorexia, that is अगर like patient को already भूख नहीं लग रही है, बता रहे हैं, तो हम oral cavity सबसे पहले चेक करते हैं कि क्यों है, क्या रीजन है, राइट? देन अनप्लेजेंट स्मेल, मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट कौन कौन सा बोलते हैं एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से भी ओरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, सो ओरल कैविटी को चेक करना चाहिए। तो मेडिकल हिस्ट्री, इवन पेशेंट जो रेडिएशन या कीमो ले रहा है, देन एनी ट्रीटमेंट हिस्ट्री वी हैव टू आस्क, राइट? देन सोल्यूशन यूज फॉर द माउथ केयर, वी नो कि हमें हॉस्पिटल में हमारे पास आराम से सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट जब पेशेंट होम होम वापस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर जाते हैं, तो वी नो दैट द पेशेंट इज अनएबल टू अफोर्ड एवरीथिंग व्हाट वी आर प्रिस्क्राइबिंग, राइट? सो एक होममेड सलाइन के बारे में बोलेंगे, हाउ टू मेक अ homemade saline, right? So water or 0.9% sodium chloride we have to suggest them. So how we will prepare it? We have to prepare it, we have to take 500 ml of water, 1 teaspoon of common salt, then we will tell them to boil that water, cool it and cover it until it is needed, right? So covering is very important, because खुला छोड़ देंगे फिर वो उसमें फ्लाइज वगैरह कुछ बैठ के इन्फेक्ट कर देगा, तो इसलिए we have to tell them whenever we are, while preparing a homemade solution, they have to take 500 ml of water, 1 teaspoon of common salt, boil it, cool it and cover it until it is needed. एंड ऑल्सो ओरल केयर के लिए हम वाटर तो बना लिए, अब उसके अंदर कुछ थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब, राइट? सो वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे? प्रिपेयरिंग सोडा बाइकार्ब सोल्यूशन इज 500 ml of water plus 1/4 teaspoon of baking soda, 1/4 teaspoon of baking soda करके प्रिपेयर करके रखने के लिए बोलते हैं, एंड दे कैन प्रोवाइड द ओरल केयर। लेकिन जब हॉस्पिटल सेटिंग में आते तो इतना बड़ा 500 ml वी डोंट नीड इट, सो व्हाट वी विल टेल, वी विल टेक अ 250 ml of water, 1 pinch of salt, pinch of baking soda, mix it, then the water should be a lukewarm, slightly lukewarm होना चाहिए, वो लेके mix करके, and we have a like we can use a stick like thing which has got a sponge, that we can provide them, or otherwise in the home care setting we don't have that, so what we can suggest is they can use a spoon, they can take a spoon and they can take a piece of good cleaned cotton cloth, and then they can use the handle of the teaspoon or spoon, okay, and then that handle has to be covered with the
that cotton or gauze, right? Sorry, cotton cloth or gauze, and then wrap it completely without any exposure of the spoon, completely wrap it, and then provide the oral care, right? So we will have a video upcoming, so you can see in that, right? So what are the self-care education we have to tell to the patient? Brush the teeth twice a day with the soft toothbrush. Toothpaste left in the mouth can cause dryness, so we have to tell the patient to rinse the mouth with the homemade saline or soda bicarb solution. Then the tongue to be brushed with soft toothbrush, and we have to encourage plenty of fluids. And also we can tell the patient to take pineapple. Why? Because pineapple has got a mouth cleansing enzyme, and also it also stimulates the salivary gland. And however it is acidic, we know that the patient is having ulcer and we'll provide them pineapple, it will be irritating. But the patient who can tolerate, they can have pineapple also, because it has got an mouth cleansing enzyme. Then dentures, if the patient is using dentures, they have to remove it at night. Then in the morning before using it, clean it and then use it, right? Then what are the procedure for preparing, requiring assistance? If the patient require assistance for oral care, we have to first explain the procedure to the patient. We have to provide privacy. The position is very important. After explaining the procedure and ensuring privacy, we have to give them semi-Fowler's or Fowler's position until it is contraindicated. Then place the towel under the chin and over the bedding, and pour some water to the brush and place the dentifrice on it, right? Then encourage the patient to rinse his mouth frequently and thoroughly. Then remove and clean the equipment, wash the hands, document the time, solution used, and condition of the oral cavity. So while we are doing an oral care, assessment and documentation is very important. Along with that, we have to explain the procedure, which is very important, right? Hope it is clear. Oral care is clear. Then we can go to the next one. Before that, we can see that what are the articles which are necessary for the oral care, right? So in hospital setting and home care setting, there are two different settings. So we How have, long the solution can be carried out? yeah, For how long we can store that solution? Sodium bicarbonate or normal saline? 500 ml means like if the patient is using 3 times a day also, 500 ml it can consume, right? So until a day, that is 24 hours they can use it, not more than that, because or as per the need, because in north also there are like water is not that much sufficient in the home, right? Supply is also less, I think so, because in that when I was 2020, there are areas where water is also minimal in their house setting. So we will suggest them that at least they can use that solution, normal saline solution, they can cover it and use it, or as required they can use the water level, right? But the normal, what we are suggesting is 500 ml they have to take the water, right? Then hospital setting, artery forceps, tongue depressor, gauze piece, normal saline, small Macintosh, face towel, clean water, swab stick, kidney tray. In the home setting, as I said, how to wrap that spoon's handle, that is you can see in the image. Spoon or ice cream stick we can take, or otherwise clean cotton cloth, gauze piece, homemade saline, plastic sheet, face towel, clean water, swab stick, and kidney tray, right? So procedure for a terminally ill patient, any difference you can say, like, is there any difference while we are providing a patient to a bedridden patient who is conscious and unconscious patient? What slight difference we have to follow while giving a oral care? क्या चीज डिफरेंट है? लाइक टर्मिनली इल है तो मुंह खोलने के लिए बोलेगा तो वो खोलेंगे क्या मुंह? नहीं मैम, वो मुँह नहीं खोल सकते, दूसरा वो एस्पिरेट भी कर सकते हैं, तो हमें उनका मुँह साइड करके वो करानी होती है। हाँ। और क्योंकि वो अपने आप अपर और लोअर जॉ को अलग नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ सेपरेटर चाहिए बीच में। हाँ, सेपरेटर हमें सेम जैसे गॉस रोल करके जो स्पून बनाया है हैंडल में, सेम एक और ऐसे यूज करके एक साइड में रख के एक साइड का क्लीन करके फिर दूसरे साइड में, आगे वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे करना है, राइट? सो इसमें भी हमें एक्सप्लेन प्रोसीजर क्यों करना है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते लेकिन थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, तो इसलिए एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, प्रोवाइड प्राइवेसी, प्लेस अ स्मॉल मैकिंटोश विद अ फेस टॉवल अंडर द हेड, semi-Fowler's position or head turned towards the side in order to prevent aspiration.
Use a padded tongue blade or to open the mouthpiece or separate the upper and lower teeth. Soak cotton ball in homemade saline or squeeze out excess water. Then the important thing while we are cleaning the teeth, we have to notice is that lower chewing surface, inner side and outer side. In a single straw method, we have to do the cleaning, right? Upper chewing surface, inner side and outer side, right? Then clean the cavity from proximal to distal using single gauze piece for each stroke. That is the important point which we have to remember while we are giving oral care. Then clean with the normal water. Lubricate the lip using swab stick. Document time, solution used, condition of the oral cavity or any abnormalities noticed and the patient's response, right? So these are the important points that we have to follow while we are doing a oral care for a terminally ill patient. And what are the lubricants we have to use? Liquid paraffin, coconut oil, ghee oil or Vaseline, right? So white petroleum jelly is the commonly used thing. Otherwise north में mustard oil, right? बट वो सब नहीं बोलना है. लुब्रिकेंट्स एज अ मीडियम अच्छा जो होता है वो लिक्विड पैराफिन, कोकोनट ऑयल, घी ऑयल और वैसलिन, राइट? होप द वीडियो वाज क्लियर. किसी को कुछ डाउट है उसमें? मैम जो गॉज चेंज करने के लिए बोला है एवरी क्लीनिंग, वो मतलब वन टाइम की पूरी क्लीनिंग होने के बाद या वन साइड की करने के बाद दूसरी साइड के लिए फिर से नया गॉज? वन साइड करने के बाद दूसरे साइड के लिए नया गॉज मीन्स वन सिंगल स्ट्रोक बोलते हैं ना, तो इंटीरियर टू आउटीरियर, आउटीरियर मीन्स इंटरनल टू प्रॉक्सिमल टू डिस्टल. हम जब एक स्ट्रोक में करते हैं तो सिंगल स्ट्रोक की है, फिर इंटरनली और आउट बेसिकली बोलते हैं ना कि अवेलेबिलिटी. बट हम हॉस्पिटल सेटिंग में करते हैं तो सिंगल अपर पार्ट में लोअर चूइंग सरफेस का इन डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल, फिर नेक्स्ट स्वैब लेके साइड में और इनर साइड में करते हैं. बट हॉस्पिटल लाइक हाउस सेटिंग में अवेलेबिलिटी के हिसाब से गॉज तो होगा नहीं, तो कॉटन जो क्लॉथ है वो क्लीन करके उसको स्ट्रिप्स में काट के यूज करने के लिए बोलते हैं. तो एज अवेलेबिलिटी. सिंगल स्ट्रोक मतलब ये होता है कि जैसे बोलते हैं ना ओपन करते हैं माउथ, राइट? सो हमें दिख जाता है कितना अनक्लीन है माउथ, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेल देम टू इनिशिएट द सिंगल स्ट्रोक लाइक चूइंग सरफेस लोअर सरफेस में फर्स्ट सिंगल स्ट्रोक, देन अंदर अंदर, राइट? सो उसमें एक स्ट्रोक चलेगा, लेकिन ओपन करते हमें दिख गया विजिबिलिटी में कि बहुत सारा लाइक क्लीनिंग बहुत जरूरी है ना, बहुत सारा गंदा है, तो उस टाइम पे लोअर सरफेस में सिंगल स्ट्रोक करके क्लीन करो. और अगर वो गॉज ज्यादा डर्टी हुआ है तो इमीडिएटली चेंज इट. एंड देन इनर सरफेस में एक अगला गॉस लीजिए, आउटर सरफेस में एक और लीजिए, तो एक साइड में 3 यूज होगा, फिर इस साइड में 3, तो टोटल 6 है ना, 3 3 6, राइट? सो ऊपर भी 6 सो ऐसे करके भी हम बता सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतना गॉज आपको लगेगा. बट डिपेंड्स. सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि वो गंदगी वापस जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पे वापस हम ना भेज दें, इसलिए हम सिंगल स्ट्रोक को ज्यादा इनिशिएट करते हैं, राइट? लॉजिक बस समझो कि क्यों हमने दिया सिंगल स्ट्रोक, क्यों बोला. इसलिए बोला क्योंकि मौत बहुत ज्यादा गंदा होगा. सिंगल स्ट्रोक अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वापस से वो गंदगी जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पे दे रहे हैं, राइट? सो अगर गंदगी ज्यादा है तो सिंगल स्ट्रोक मींस एक साइड एक यूज करो, अगले साइड दूसरा यूज करो, नया वाला, राइट? सो वो है ये बोलते रैशनल. जो भी चीज हम करते हैं वो रैशनल इसके लिए इस पर्पज से करते हैं, तो ऐसे ही करना है, राइट? ओके. एनी अदर डाउट्स? So next we will go to care of eyes, right? So care of eyes क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो केयर ऑफ आइज में हमें पेशेंट को बताना चाहिए? रेस्ट इज ऑल. एक्सप्लेन करना, प्राइवेसी देना, वो सब इंपॉर्टेंट है, कंफर्टेबल पोजीशन देना. बट क्या चीज हम जैसे ओरल केयर के लिए सिंगल स्टॉक ज्यादा हमने एम्फोसिस किया, लोअर से इनर टू आउटर ऐसे करना है, राइट? अपर भी वैसे ही. आइज में क्या चीज हम इम्पोर्टेंटली पेशेंट को बताते हैं? आईज में इनर टू आउटर इनर कैंसस टू में, आउटर इनर करते हैं कैंसस और टू रिपीट नहीं करते. वेरी गुड. संदीप सेम जी ने उसको कहा
इनर टू आउटर कैंथस क्लीन करते हैं. लक्ष्मी जी ने क्या कहा? आई डिडंट हियर इट. मैम इनर टू आउटर ही करते हैं और दूसरा सेम स्वैब को रिपीट नहीं करना होता. नहीं करना होता. वेरी गुड. राइट. सो सेम एक्सप्लेन द प्रोसीजर. कंफर्टेबल पोजीशन, वॉश हैंड्स, क्लीन द आईलिड्स एंड आईलैशेस विद अ वेट स्वैब. बोलते ना पहले हम देखते हैं तो पूरा पस से वो रहता है. सो हम एक स्वैब लेके गीला करके उसको क्लीन कर लो पहले. राइट. देन wipe the lids from the inner canthus to the outer canthus. That is the important thing which we have to remember while giving a care of the eyes, and it should be with a single stroke and single swab, right? And then documentation. Then care of the nose and ear. इसमें क्या चीज कंसिडर करना है? What we have to remember while giving a care of nose? First we'll look into the nose. Nose में क्या देखना है? फॉरेन बॉडी ना हो कोई, कभी हम उसे एक्सीडेंटली और पुश करते हैं अंदर. हाँ. Right. So explain the procedure to the patient. Remove the secretions from the nostril. Wash, wet wash cloth or a cotton applicator moist with normal saline or water. Simply cotton soak करके clean कर देते हैं, है ना? जो visibility तक अंदर तक तो नहीं जाते, लेकिन visibility तक जितना दिखता है वो clean करते हैं. Then ear में क्या चीज important है? फ्रंट सब क्लीन करते हैं. बैक, दैट इज बैक ऑफ द ईयर, पिन्ना के पीछे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज लेफ्ट आउट एरिया. So clean any dirt accumulated behind the ear or in front of the ear, and collection of the wax in the ear may cause hearing problem. तो wax भी removal के लिए vigorously cotton butt swabs तो butts तो avoid करेंगे, वो नहीं promote करना है. उसके अलावा एक स्टिक, छोटा सा स्टिक लेके उसमें कॉटन रैप करके चाहिए तो क्लीन कर सकते हैं. अदरवाइज वैक्स ऑयल जो है वो ही इनिशिएट करते हैं. राइट. देन केयर ऑफ द हेयर. हेयर में क्या चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है प्रोसीजर करते हुए? और भी इतने सारे लोग हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, कोई सुन, लाइक आप लोग बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलो रिप्लाई तो मिल रहा है ना, सुन रहे हैं सब. ओके. मैम केयर ऑफ हेयर द में Dandruff. वो ना हो कि कोई बैंड वगैरह कुछ ना हो कि हम ऐसे ही करने लग जाएं. मतलब आर्टिकल्स कुछ और हैं तो उनको हटा के और मतलब पकड़ के हेयर्स को आराम से, कि हम उनको वो ना कर दें. ओके. सो डॉक्टर Pradeep Kaur has said we should cover the ears while washing hair. Very good. We have to use the earplugs and cover, and we have to put the earplugs so that water will not go inside. Then अब बहुत लंबे बाल है सबके, तो पूरा बाल एक साथ लेके वॉश करेंगे कि दो साइड में डिवाइड करके करेंगे? Divide. वेरी गुड. सो डिवाइड करके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और जब हम लेटा के हेड वॉश करते हैं तो जो ईयर बड्स है वो उससे ईयर्स को क्लोज करना है और बाद में प्रोसीजर के बाद निकालना है. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर. राइट. देन जो क्लीन कर रहे हैं हम हेयर, गर्दन के नीचे शोल्डर वाइज वी हैव टू कीप अ टॉवल अंडर दैट और अ ड्रॉ शीट, सो दैट जो पानी है वो शोल्डर्स को गीला ना करे. राइट. एंड द वो जो हेड है वो टेबल के टिप में होना चाहिए, ताकि वहां से जो ड्रॉ शीट है वो बकेट के अंदर हो, ताकि वो पानी पूरा अंदर गिरे. ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो याद रखना है. राइट. सो व्हाट सेम एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. प्राइवेसी इंश्योर करना. हेल्प द पेशेंट टू मूव हिज हेड टुवर्ड्स द एज ऑफ द बेड एंड रिमूव द पिल्लो. Then protect the bed linen and pillow cover with a towel or a Macintosh, that should be rubber or plastic. Then insert the cotton balls into the ear. Place a Macintosh under the patient's head and neck. Keep one end of the Macintosh in a bucket to receive the water. Then wash thoroughly with the soap and water. Rinse thoroughly and dry the hair. Braid the hair into two of each side of the head and then remove the cotton balls from the ear. Right? Then nail care. Nail care के लिए क्या चीज important याद रखना है? ऐसे ही जाओ और नेल कटर से काट दो, कटेगा? नेल्स हार्ड होंगे ना, तो क्या करना है? सोक द नेल्स. सोक द नेल्स इन वाटर. सॉल्ट मैम सबसे वाटर में मैम सोक सबसे करना है. पहले ना 5 to 10 मिनट्स इनको वाटर या ल्यूकवार्म वाटर में डिप करना है. जी.
जी सोक करके उसके बाद 5 मिनट सोक करने के बाद फिर कट करेंगे तो इजीली सॉफ्ट होके कट जाएगा, राइट। सो सबसे पहले सेम हर प्रोसीजर के लिए एक्सप्लेन द प्रोसीजर, आर्टिकल्स असेंबल करना, फिर थोड़ा सा जो नेल्स है उसके नीचे रबर शीट अंडर द हैंड और लेग ऑफ द पेशेंट, देन सोक द फिंगर इन द वार्म वाटर फॉर 5 मिनट्स, वो भी थोड़ा लूप वार्म वाटर होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन कट द फिंगर एडजेस ऑफ द नेल, एडजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो एडजेस रह के वो स्क्रैच जहां करेंगे वहां पे टीयर हो जाएगा ना स्किन। देन एनकरेज द केयर गिवर टू प्रोवाइड नेल केयर। देन बेड बाथ, बेड बाथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन याद रखना है? कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा ना बेड बाथ के लिए भी। फुल बॉडी एक्सपोजर करेंगे कि पार्ट बाय पार्ट एक्सपोजर करेंगे एंड क्लीन करेंगे? पार्ट बाय Part पार्ट। by part, ma'am. Which is the least cleanest and which is the most cleanest? सबसे गंदा कौन सा पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट या लोअर बॉडी पार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम डायपर केयर करेंगे पहले, बेसिकली पहले उसका यूरिन दैट इज यूरिन स्टूल। डिफरेंट, वो तो ओवरऑल में जो हम प्रायोरिटाइज करते हैं वो, लेकिन अभी हम जस्ट बेड बाथ के लिए बोल रहे था। लोअर ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैम। हाँ, अपर से लोअर क्लीन करेंगे, राइट। सो बेड बाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड हाइजीन। सो किस पर्पज से हम बेड बाथ करते हैं? टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द बॉडी, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो वेस्ट है थ्रू द स्किन उसको एलिमिनेट करने के लिए, या जैसे एक सरफेस क्लीन करेंगे तो दूसरे सरफेस अगला दिन क्लीन करेंगे तो वो जो स्किन डर्ट है उसको जल्दी जल्दी निकाल देगा, राइट। एंड ऑल्सो इंड्यूस स्लीप, provide comfort, give the patient a sense of well-being and also regulate the body temperature, right? Then procedure करने के लिए explain the procedure, maintain privacy, all needed equipment should be at the hand and conveniently placed. The temperature of the water should be adjusted for the comfort of the patient. Keep the patient near to the edge of the bed to avoid overstraining or reaching of the back of the caregiver. Caregiver को बोलना है कि पेशेंट दूर ना लेटे, थोड़ा बेड से पास आके लेटे, नहीं तो क्या होगा, या उधर पास को लेटा है, नहीं तो जो केयर गिवर दे रहा होगा पहले दिन ही कमर दर्द है ना, तो इसलिए we have to tell them, oh don't overstrain your back, so you have to keep the patient towards your side, right? And only small area of the body should be exposed and bath at a time. Then remove the soap completely from body to avoid drying effect. Cleaning is done from the least cleanest area to the least cleanest area. That is from upper to the lower part we have to clean. So if we are cleaning the hand, we have to expose only the hand. If we are cleaning the abdomen part, we have to expose only that area and then we have to clean it, right? And through inspection of the skin, especially at the back of the body, should be done to find out the early signs of pressure sore. So this is also very important. While we are giving a bed bath, we have to inspect the skin for or any bony prominence area for pressure sore, and also apply moisturizing cream and massage for at least 3 to 5 minutes in order to promote circulation. Then back care. Back care, as we know, there are pressure points in the back. So we have to give special attention into the pressure points. We have to give the back care every 2 hours. Lather soap by sponge towel, wipe the soap, rinse with the plain water. Dry the area by patting, not by rubbing. Why patting, not by rubbing? क्यों हमें रब नहीं करना है, ओनली पैट करके ड्राई करना है, थपथपा करके करना है? मैम लेटे लेटे स्किन वैसी हो जाती है बहुत ज्यादा, वो तो अगर हम करेंगे तो हम उनको सोर कर सकते हैं, वेरी गुड। अगर हम rubbing करेंगे तो। जी बिल्कुल, है ना। Apply moisturizing cream and massage at least 3 to 5 minutes. Massaging helps to increase the blood circulation of the area and prevent bed sore. Active and passive exercise, that is also very important while we are giving
care, right? So active exercise means patient अगर actively खुद से exercise कर सकते हैं तो we can promote that exercise. अगर patient खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो we have to tell to provide them passive exercise, that is with the help of the caregiver. हम support देके patient से, like अगर patient extremity खुद से नहीं उठा पा रहा है तो caregiver को बोल के exercise करवा सकते हैं, right? With the help of the caregiver we can provide them exercise. So active and passive exercises हम क्यों promote कर रहे हैं? To prevent the contractures, right? Or any joint stiffness, उसको prevent करने के लिए हम mainly exercise को promote करते हैं, right? Then next we'll come to the procedure, that is catheterization. Catheterization, as we are aware, what is it? That is, a Foley's catheter is a sterile germ-free tube that is inserted through the urethra into the urinary bladder to drain the urine, right? So as you can see in the image there, it starts from the tip to the outside part, right? So tip, that is a balloon opening is there, where we fill the distilled water and fix that tube in the place, right? And bladder opening is also there. There is a two lumens, that is one is balloon port and other is urine drainage port, right? And also in that lumen, one part where there is a urine drainage port, there is a size of that catheter is indicated. So normal adult size starts from 14 Frenches, right? Then types of catheterization. How many types? There is indwelling catheterization, indwelling suprapubic catheterization, clean intermittent catheterization, and also condom catheterization. As you can see in the image, indwelling catheterization, there are two types, that is silicone and normal rubber, right? So latex wala, है ना? Then clean intermittent catheterization. Indwelling suprapubic catheterization means directly into the abdomen, through the abdomen to the urethra, the hole is initiated and the catheter is inserted, right? And self-intermittent clean catheterization means a nail cath containing different sizes, 12, 14, 16, depend upon the size of that area, we will provide that catheter. And the paraplegic patient who has got sensation, so they can use it every third hourly or fourth hourly as required, so in order to drain the urine with the help of a lubricator, right? So this image shows that suprapubic tube starts from the abdomen directly to the bladder, urinary bladder. There is an opening and the catheter is inserted into that. So that is also a method, a medium of catheterization, and also normal Foley's catheterization, right? So it can be done for both male and female. Then procedure is, all the catheterization procedure is done in sterile precaution, using sterile precaution. Then choose the smallest size as possible. That is, it starts from 14, 16, 18. So 14 is the first size which starts for an adult. Then lubricate generously and wait. It is important to ensure the bulb is in the bladder. And how much we have to inflate, that is 10 ml. Too much can cause bladder spasm. Antibiotic prophylaxis for urinary catheter insertion is not recommended, right? So earlier we used to give antibiotics because it's a foreign body, we are inserting it, but nowadays it is not that much recommended, but if required we can give antibiotic prophylaxis, but no, it is not recommended now. Then clean intermittent catheterization, that is, whenever we encourage the patient to do intermittent catheterization, we have to maintain privacy. Washing hands is very important because this procedure is done through clean procedure. So we have to wash tell the whoever the patient, if itself the patient is doing, we have to encourage them to do the hand washing thoroughly. Then position according to the comfort and level of the patient. Nail cat size starts from 12 Frenches. Lubricate the tip before insertion. That is, nail cat tip has to be lubricated before insertion, and time interval should be every 4 hours or 3 hours. Then clean the nail cat under running water and keep it dry, clean container, right? So this is very important. The last point which we have to suggest the patient, in order to prevent frequent infection episodes, we have to tell them the nail cat has to be clean, and not one nail cat they have to use. At least if they are doing 4 times a day, they at least should have maximum 4, right? So we have to tell them, if first day there will be no use, every time they are using, they can use the new one, but the very next day what they can do is they can use the first day, that is first day, the first one they have used, that has to be cleaned in the running water. It has to be dried in and stored in an airtight container. That is very important, we have to tell them, right? Then what are the advantages? Nail cat is very like easy.
nothing, no bag is there to carry, right? So, and also image disturbance is not there for the patient. So, and the advantages are improve the quality of life, increase self-esteem and confidence, easy to use, inexpensive, reduce the risk of infection, and also improve the sexual life. Then condom catheterization, the patient who has got night urinary incontinence, right? So we can suggest them, or the patient is unable to, like if he has got any vertigo symptoms at night time, so we can suggest them condom catheterization. Or the patient who is using intermittent catheterization at the daytime and he is unable to do it in the night time, they can use the condom catheterization. So condom catheterization, we have to tell the patient, as you can see in the image, that condom, it's like a condom shape, and the tip we can attach the Euro bag, right? So, and it has got the tapes along with that. So we'll tell them to insert it in the penis area, and also then the taping should be done above the condom catheter, right? So above that, otherwise what will happen, if that tape will follow the skin, when it will be removed, the skin will be peeled off. It's very sensitive area, right? So we have to tell, specially educate while the patient, if the patient is using condom catheterization, we have to specially educate them, right? Then what are the advantages? It has got many advantages, like less catheter associated urinary tract infection, comfortable than indwelling catheter, less movement restriction. While we know when patient is in a Foley's catheter, they have to carry the bag very consciously, right? They have to carry the bag, otherwise the bag can also get teared, or otherwise the single stretching of that catheter can cause leaking, right? So, and non-invasive, if nothing is inserted into the body, that is the main advantage. Then disadvantage is that rubber, latex allergy we can cause, right? And that is very important. And also, while the condom catheter is inserted, skin irritation or skin breakdown, and even if the size is not proper, leakage can happen, right? So the proper size is very important. Next is bladder care. Bladder care is catheter should be changed from 3 weeks to the 1 month, right? So I think in your area also it is only advisable. So if the patient is in a Foley's catheter, they have to change within 1 month of time, right? ऐसे ही है ना, 1 महीने में बदलना है. Yes, ma'am. Okay. So provide perineal care. So whenever we encourage bladder care, we have to provide perineal care also. Keep the urobag cap always closed and below the waist level. This is very important. कुछ patient होते हैं ना, हाथ में ही carry करके चलते हैं, यूरिन नहीं आ रहा, फिर यूरिन प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? सो इसलिए वी हैव टू टेल देम, यू कीप द यूरोबैग कैप ऑलवेज क्लोज एंड बिलो द वेस्ट लेवल. Empty the bag when it is 3/4 full. That is also very important. Encourage to take fluid at least 3 liters within 24 hours, or at least 2.5 to 3 liter maximum, or the extent he can drink within 24 hours. And observe urine is draining freely. Any color changes in the urine should be reported. बोलते हैं ना, pus cells या फिर sediments जैसे दिखता है तो immediately report करना है. Then encourage the patient for daily bowel movement. That is also very important. Why? क्योंकि bladder जो anal area में अगर क्या बोलते हैं, बाउल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेटेड है पेशेंट, तो यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकता है, तो इसलिए बाउल मूवमेंट एंकरेज करना है, राइट? एंड ऑल्सो पेशेंट बेड रिडन है तो बाउल मूवमेंट थोड़ा दिक्कत करता है, तो इसलिए वी एड लैक्सेटिव्स टू देयर medicines, right? Then care of the perineum. How we will provide the perineal care? Perineal care should be cleaned after each act of urination and defecation. Clean with the soap water daily 3 to 4 times and keep the area dry. Clean from the cleanest to the least cleanest area, and it should also follow single stroke and should be cleaned after giving perineal care. Hand should be clean, right? Then bowel care. How we will provide the bowel care? In a bedridden patient, due to lack of exercise, like privacy, reduced food intake and medication, the patient can lead to constipation, right? Mostly he leads to constipation. So we have to encourage the patient for the bowel movement daily and give time for the bowel movement, right? So that means that we have to encourage them. They have to at least wait for a time. Like बोलते ना, बीमार होते तो हम भी छोटे बच्चों जैसे हो जाते हैं, राइट? तो पेशेंट को हमें एनकरेज करना है कि थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम दो तो बाउल भी मूवमेंट होगा, राइट? And also patient should be encouraged to take high fiber diet and adequate fluid intake. That is very important. And encourage regular exercise.
Bowel care continues, that is use of bedpan. कैसे bedpan? It is very mandatory to maintain the patient privacy. Use of a commode or a lavatory for defecation. If spurious diarrhea, what is spurious diarrhea? Any idea? Okay, so we have to ask for the history of patient, like bowel movement history we have to ask. उनसे पूछेंगे कि कितने दिनों से आपको कॉन्स्टिपेशन है, या फिर ऐसे स्प्यूरियस डायरिया मींस डायरिया लूज स्टूल जैसा जा रहा है, कितने दिनों तक है. तो पेशेंट बोलेगा कि नहीं, मुझे पिछले हफ्ते पूरा कॉन्स्टिपेशन था, उसके बाद मुझे अभी 2 दिन से पानी जैसा जा रहा है, राइट. सो वी हैव टू टेल द पेशेंट. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्प्यूरियस डायरिया. दैट इज पेशेंट पहले 1 वीक पहले बोल रहा है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन था, उसके बाद 2 दिन से अगर या 3 दिन से या 4 दिन से वॉटरी स्टूल जा रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ स्प्यूरियस डायरिया. दैट मीन्स क्या होता है, कॉन्स्टिपेटेड जो अपना कॉलन होता है उसके साइड से जो कॉन्स्टिपेशन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से, हार्ड स्टूल होने की वजह से जो कॉलन का जो म्यूकोसल लेयर है उसके थ्रू जो है छोटे छोटे मीन्स पानी डिस्चार्जेस ऐसे होने लगता है, राइट. सो दैट इज स्प्यूरियस डायरिया. सो इफ द पेशेंट कंप्लेन्स दैट ही हैज बीन constipation associated with diarrhea for past 1 week or 2 week, then that is called as spurious diarrhea, right. Constipation associated with loose stool, right. So क्या करेंगे, what is the management? First we have to do per rectal examination. So if when we are doing a per rectal examination, PRE, so we have got findings, right. So when we do a PRE, we will get either it is a ballooning rectum. Ballooning means बोलते ना, जब हम पीआरई करते हैं तो कुछ भी नहीं है, खाली है, राइट. टिप तक कुछ भी नहीं है, फिंगर टिप तक कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ बेलूनी रेक्टम, राइट. देन पीआरई कर रहे हैं, किसी किसी में लोडेड रेक्टम होगा, कंप्लीटली हार्ड स्टूल्स है, सो वी हैव टू डू अ डीआरई. देन फॉलोड बाय वी हैव टू गिव द एनिमा, राइट. सो पीआरई करेंगे, एग्जामिन करेंगे, फाइंडिंग्स के हिसाब से मैनुअल रिमूवल करना है तो रिमूवल करेंगे, नहीं तो अगर बेलूनी रेक्टम है तो वी हैव टू गिव डायरेक्ट higher enema. So what in the palliative care setting we do here is we give higher enema, that is sodium phosphate enema, 2 enemas with the use of suction catheter, right. We will insert a suction catheter, lubricate it, we'll insert the suction catheter. Then after, what will happen, that suction catheter will go to the ascending colon till that area, then we will give the enema. So at that time what will happen, all the enema, all bowel wash will be accompanied from the transverse colon, and everything will be covered, whole colon will be covered, right. So we'll clean in that way, right. So this is the important thing that is different from other setting. What we follow is using the suction catheter, we will insert sodium phosphate enema, that is called as high enema. So in order to treat the spurious diarrhea, we follow high enema, right. Then nasogastric tube feeding. What is nasogastric tube feeding? मैम जो पेशेंट ऑरली नहीं ले पाते उनको उनके या तो फेरिंग्स से या नोज के थ्रू एक ट्यूब डाल के उससे जो भी हम फीड वगैरह करा रहे हैं वो. Yes. Okay, thank you. So this is the process of feeding with the tube that is inserted through the nose, pharynx, esophagus and into the stomach. That is, हम बोलते हैं ना, मेजरमेंट हम जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा होगा, या अभी भी प्रोसीजर ऐसे ही करते हैं ना, नोज से या from the tip of the nose to the earlobe, from earlobe to the esophagus, right. So from nose to the pharynx, then esophagus, then into the stomach. That is only from tip of the nose to the earlobe, then towards the esophagus we are putting a tube in order to give feeding, right. Feeding nutritional intake के लिए basically, right, or to give medication, that every purpose it will include, right. So it has got different colors, right, as it is given, green color, blue color, as per the size it is given. Next, care of the nasogastric tube. What is the important thing which we have to remember while giving a nasogastric tube? मैम पोजीशन का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है, अगर पोजीशन ठीक नहीं होगी तो वो स्टमक तक पहुंच नहीं पाएगी, एस्पिरेशन का रिस्क रहता है ना. एस्पिरेट कर सकता है. नेक्स्ट, और कोई बता सकता है और क्या हो सकता है? Can go into the lungs. Aspiration risk. Then
Anything else that is we have to remember while we are feeding a patient with NG tube? कोई भी NG tube feeding नहीं करते हैं क्या आपके यहाँ पे? मैम इन करंट सेटअप में तो कोई एनजी फीड नहीं होती, बट सबको एक्सपीरियंस है हाँ वही तो कि बताइए ना। एनजी फीड कैसे दी जाती है। बेसिकली क्या होता है कि एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद उसको पोजीशन चेक करनी होती है, एक्चुअली वो स्टमक में ही है या फिर वो उससे पाथवे से अलग है। अगर वो उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम डालने के बाद एयर पुश करते हैं और उस पे स्टमक पे स्टेथ रख के उसकी साउंड सुनते हैं। अगर हमें साउंड परफेक्ट सुनाई दे जाती है तो हम उससे उसको असेस कर लेते हैं कि ये सही है। अदरवाइज दूसरा तरीका होता है कि उसमें हम एस्पिरेट करके देख लें, उसमें गैस्ट्रिक कंटेंट आते हैं तो भी वो एक तरीका होता है कि नेसोगैस्ट्रिक चेक करने का। अगर इन दो मेथड से भी चेक नहीं हो पा रहा तो फिर हम एक्सरे एब्डोमेन करा के एक बार चेक कर सकते हैं कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब सही डली है या गलत डली है। अब हम मैम केयर कैसे क्या करेंगे? ना वाटर, केयर कैसे मैम करेंगे? वाटर भी दे सकते हैं इसमें मैम, जैसे ना फीडिंग का आफ्टर फीडिंग के हम वाटर इंसर्ट कर सकते हैं ताकि ब्लॉकेज ना हो, एक ये भी कर सकते हैं हम। हाँ मीन्स फीडिंग देने से फूड पहले। की कंसिस्टेंसी भी देखनी पड़ती है कि हाँ ऐसा वेरी फूड गुड। हो कि वो आराम से जा पाए। सो नर्सिंग केयर करते टाइम में हमें ये देखना है कि हमने प्रॉपर पोजीशन दिया है कि नहीं, एस्पिरेशन का रिस्क तो नहीं है। ट्यूब को हम जब भी फीड कर रहे होते हैं ट्यूब को पहले पिंच करके ब्लॉक करना होता है ना, उसके बाद ट्यूब को जो सिरिंज है उसको अटैच करना होता है, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होगा, एयर इंसर्ट होगा, राइट। पहले फीड करने से पहले एक बार एस्पिरेट करके देखो कितना कंटेंट स्टमक के अंदर है। अगर 50 ml से ज्यादा है तो वो स्किप कर दो, फीडिंग नहीं देना है, राइट। अगर 50 ml से कम है तो फीडिंग करो, राइट। लेकिन फीडिंग देने का भी है, दैट इज every 2 hours फीडिंग वी हैव टू दे। ये सब इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू केयर व्हेन वी आर गिविंग अ नर्सिंग केयर, नर्सिंग एस्पेक्ट से वी हैव टू थिंक लाइक दिस, राइट। सो every 2 hours 200 to 250 ml होममेड, वो भी ग्राइंडेड, बिल्कुल बोलते हैं ना, एक भी हार्ड स्टफ नहीं होना चाहिए, राइट, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। एंड अबाउट 25 ml पहले प्लेन वाटर देना है, उसके बाद फीड देना है, फिर उसके बाद 25 ml अगेन वाटर देना है, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज पूरा जो फूड है वो ट्यूब से वॉश आउट हो सके। देन पोजिशनिंग आफ्टर द फीडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मिनट्स तक सेम फॉलोअर्स पोजिशन में रखना है। वाई, क्यों रखेंगे हम पेशेंट को फॉलोअर्स पोजिशन में? बेसिकली मैम फाउलस पोजीशन रखने का रिफ्लक्स होता है, तो रिफ्लक्स होने के बाद वो एस्पिरेट ना कर जाए, उस पोजीशन में वो ग्रेविटी के साथ रहेगा तो नीचे की तरफ ही रहेगा फूड कंटेंट, वो ऊपर नहीं आ पाएगा। अदरवाइज वो रिफ्लक्स होगा तो अगर वो ट्रके के थ्रू एस्पिरेट भी कर सकता है बंदा। वेरी गुड, यस। सो क्या होता है ना, ट्यूब जब हम इंसर्ट करके रखते हैं तो ईसोफेजियल स्प्लिंचर जो है वो हमेशा ओपन रहता है, राइट। सो ईसोफेजियल स्प्लिंचर ओपन रहेगा तो क्या होगा, वापस अगर हम लेटाएंगे तो रिगर्जिटेशन होगा और दैट कैन लीड टू एस्पिरेशन। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 30 मिनट्स तक फॉलोअर्स पोजिशन ही देते हैं ताकि वो रिगर्जिटेशन ना हो, है ना। ओके, देन उसके बाद ओरल केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनजी ट्यूब रखे हुए पेशेंट को ओरल केयर देना है, मॉइस्ट लिप्स को मॉइस्ट करना है, एंड ऑल्सो एडेसिव टेप जहाँ पे है उसको फ्रिक्वेंटली हमें चेंज करना है, लाइक पीरियोडिकली चेंज करना है, फ्रिक्वेंटली नहीं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट नोज अल्सर, राइट। जो एडेसिव टेप्स है उसको हम अवॉइड ही करते हैं। नॉर्मल माइक्रोपोर होगा तो वो यूज करेंगे, ज्यादा स्टिकी होगा तो क्या होगा, वो स्किन को लैसरेट करेगा, राइट। तो these are the important things which we have to remember. जैसे आपने कहा, everything you know but you don't respond, that is the important thing. While we are giving a like lecture, we know this is a general topic, so better will be what all things you know you have to add upon, and so that we can also add, right. So hope you have understood how we have to care for a patient with nasogastric tube. Yes, ma'am. So we will see like we have got a catheter care video, and also we have got a nasogastric tube feeding. Hope nasogastric tube feeding is also clear. So the session is over. If you have any doubts, we can ask. If you have any doubts related to today's topic, you can ask. Is it possible a hands-on training? For hands-on training, like we have got Shripya ma'am.
So Shripriya ma'am is the better person who can give you the reply. Yes, we do have hands-on training at our location, but I believe you all represent an organization and your training was scheduled as per the request from the organization. Of course, we would be happy to provide hands-on training if your organization also supports the same. I would strongly suggest you to get in touch with the regional coordinator, Dr. Jatin Bukal, who had arranged this training. Yeah, any other doubts? Otherwise, we can wind up the session. Hope today's session was clear. And if you have any doubts, we have got the WhatsApp group. You can ask in that WhatsApp group. We will respond as per. And thank you so much for your active participation and quick response also. Thank you so much for joining. Thank you everyone for joining in, and we'll be meeting in another exciting session.